अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान एंड वेलकम बैक टू मोटिवेशन, जहाँ पे आपकी सक्सेस जर्नी हमारा मिशन है। होपफुली लास्ट वीडियो आप लोग को अच्छी लगी होगी। थोड़ी एकदम इंटेंस और रॉ थी वो वीडियो, राइट? मतलब एकदम ही टाइप की आई होगी। वाली वाली में बहुत ही फ्रेंडली टोन वगैरह नहीं होगी बिकॉज़ वेकिंग पाकिस्तान अप, राइट? आज की हम बात करते हैं हाउ टू कम्युनिकेट विद अ क्लियर टोन एंड मेक अ स्टेटमेंट। ये एक ऐसी चीज़ है जो मैं खुद अभी तक लर्न कर रहा हूँ। आई हैवंट परफेक्टेड इट। ऑनगोइंग जर्नी है इन बीइंग एबल टू कम्युनिकेट बेटर इन अ मोर क्लियर टोन। बड़े बड़े अल्फाज और लाउड होने की ज़रूरत नहीं होती हमको। There's a way of communicating that you can get your message across in a very firm, confident, strict, rigid, yet polite and humble manner with a monotone instead of your emotions. It's like there's a way to deliver speech to see that erratic. हमको ब्रेन्स को ट्यूनिंग करनी पड़ेगी कि हम लोग अपने आप को जब इमोशनल होने शुरू हो जाए ना कॉन्वर्सेशन में, कैच करके एक सांस लेके अपने आप को सेंटर करके we own the conversation, not with emotions or a loud projection of our voice, but through the clarity of the words we're using, because they'll make the impact. Aapke words, how they make the others feel, the person you're communicating to, person wo yaad rakhega how your words made them feel. Very important. And how do clear words come? When we take a breather, actually then channel our language outwards with a clear head. So, this मैं जो भी बता रहा हूँ आपको, ये बिल्कुल भी naturally किसी को नहीं आएगा, right? Like, it is extremely impossible to just be born with a zen, calmful nature and being able to read the room 360, सबकी बातें सुन के process करना before you speak your mind or give your thoughts, and not just giving it in a reaction. This person said this person said this, my waste, my talking time is coming, this is what I need to say. Boom. Oh, take that moment, pause, reflect on everything everyone said. You be the person that has taken a pause before replying while everyone is just saying the first thing that comes to their mind. Aap seriously taken karenge. You'll be taken seriously us conversation ke andar. So let's continue moving on. Either because this is something I'm learning and what I'm doing to make certain tweaks, ये पूरी वीडियो उसके बारे में है. So अब मैं आपके साथ शेयर करता हूँ the old version of मसाम राजा. Let's go. एक टाइम था, not too long ago, आज से maybe 8 महीने 1 साल ago, before मैंने एक्टिंग शुरू की थी, तो थोड़ा 1.5 साल पकड़ ले. मेरी एक आदत थी कि मुझे था कि मैं बहुत जल्दी फटाफट बात करूँ, अपना मैसेज फटाफट सबको जल्दी बताऊँ, जो भी मैं जल्दी बताऊँ. सामने वाले को कभी समझ में ही नहीं आता था मेरी फास्ट पेस्ड लैंग्वेज, एंड हेंस मुझे फिर तो यार सामने वाला सुन ही नहीं रहा मैं क्या बोल रहा हूँ. Not realizing I am the one not communicating well. I am the one talking too fast because there's 50 million thoughts in my head that are coming through and I'm just trying to deliver them. Offload my thoughts instead of letting my thoughts flow and actually be heard by the receiving party when it's delivered in a slow manner. तेजी तेजी में मैं दे रहा हूँ, मैं बस अपने thoughts को offload करूँगा. मेरे thoughts से erratic energy, calm, peaceful mind के साथ communication अक्सर मेरी अभी भी आदत है, and I'm sure many लोगों की होगी. हमसे कभी कोई सवाल पूछता है, हम ओवर एक्सप्लेन एंड सवाल के बैक एंड में क्या रैशनल है हमारी सोचने की इस सवाल के पीछे, हम वो देना शुरू कर देते हैं. व्हाट दैट डज, कॉन्वर्सेशन लॉन्ग ड्रैग डाउन हो जाता है. इसका सिंपल सा मैं एग्जांपल आपको देता हूँ. मुझे याद है पीए में था जब 2013 में जब प्रोक्योरमेंट में प्रमोशन मिला था मुझे अकाउंट्स पेबल एनालिस्ट के बाद. मेरे बॉस थे जॉन हिलकर, सीनियर सब कॉन्ट्रैक्ट्स एंड प्रोक्योरमेंट मैनेजर फ्रॉम द यूएस, दुबई बेस्ड था, राइट? दुबई में बेस्ड था. उसने मुझे एक दफ़ा बुलाया, बोला सैम, you made this procurement file. Can you tell me why you selected this vendor A
over vendor B. I was like, yeah, John, I can definitely tell you. I selected vendor A because it had better pricing, better value, better service, quicker delivery, wasn't looking for a prepayment, da 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 da. And I didn't select vendor B because of the opposite reasons, da 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 da. Needed jawab was probably a minute or 2 minute long. He stopped me midway. He's like, Sam, I'm going to tell you how to answer this question. I understood. I know exactly where you're going. Your answer is simply vendor A gives the company better value, is better for the company, is cheaper for the company. Hence, I decided to move forward with vendor A instead of vendor B. I do not need a long, elaborate explanation, a whole story why you chose vendor A over vendor B. That was your analysis, doing your job. I just want an upfront answer. Don't give me all of the details. I have nothing to do with them. So, ये पॉज था उधर से जब मैंने फर्स्ट टाइम ये सुना था तब से मैंने बोला मैं ज़्यादा बातें तो नहीं करता कोई जब मेरे से सवाल पूछता है कि डू आई ओवर एक्सप्लेन डू आई गिव मोर इंफॉर्मेशन देन व्हाट इज रिक्वायर्ड यस आई एब्सोल्युटली डू सवाल हाँ या ना का था हाँ देकर पीछे की जस्टिफिकेशंस के क्यों हाँ है ना देकर पीछे की जस्टिफिकेशंस क्यों ना है सिर्फ हाँ या ना का सवाल है सामने वाला इन्वेस्ट करे अपनी टाइम इन एनर्जी इन नोइंग ओके you agree with this or you're saying yes to this why what's your thought process now is your dominion to share as much as you want because you've been given the stage to but clear concise accurate small factual conversations is one thing I didn't used to do which I'm doing now or मैं जब भी answer देता था ना I was always more focused I was also younger right mid-20s so and maybe even till early 30s I had this habit and then it slowly changed within me which is I would always answer the question जो भी मुझसे कोई communicate करे मेरा boss बीवी बच्चे नहीं तो standard but regardless family member भाई बहन मुझे हमेशा से था कि मेरा जो भी जवाब हो it must be a reply it must be an answer that makes me light not so maybe I'm hiding or sugarcoating कुछ चीज़ें जो ड्रॉ मुझे बोलनी चाहिए बट मैं क्यों के चारों के सामने वाला ऑफेंड नहीं और सामने वाला मेरे बारे में कुछ बुरा नहीं सोचे आई वॉज एंसरिंग टू बी लाइक नॉट एंसरिंग विथ authenticity which we talked about earlier people want you to not tell them what they want to hear not give them the good you have to be honest in a very humble clear concise and a respectful manner That's what actual conversations we need to start having through tweaking certain ways of how we answer other people. तो अब मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं जब मीटिंग्स में होता हूँ अपने एम्प्लॉयज़ के साथ या वेंडर्स के साथ या किसी के साथ भी स्लो डाउन करता हूँ अपने आप को instead of just wanting to be part of the conversation because I just want to say something. There's no need. I'll wait for the conversation to come to me. And then I'll talk in a very concise, clear manner. Mere 5 alfaz will be or are more valuable than 10 people sitting and talking for the last 1 hour or something. Because I speak when spoken to. I share when asked to in a very concise, slow manner. And it's crazy, genuinely, कि पहले जब मैं करता था और अब मैं काम कंपोजर के साथ करता हूँ I am heard more, I am respected more, I am listened to more. People want to know my mind more. Why do I think certain things? Because I'm not sharing them openly as I used to before. Over explanation and justifications. ये जो हम बात कर रहे थे, the more grounded way में मैं अपना आप को कैरी करूँ जैसे कि अभी बता रहा हूँ इतना ज़्यादा लोग और सुनना चाहते हैं जब मैं कुछ बोलना चाहता हूँ कोई मीटिंग में कोई रूम में राइट नॉट बीइंग ओवर टॉक्ड इवन इट्स दैट सिंपल not simple but by practicing it will become second nature to take a pause and then talk when being talking to and giving an accurate jawab instead of an elaborate conversation and let's talk for 1 minute on just this 2 seconds एक स्किट डेवलप करते हैं लेट्स से 4 लोग बैठे हैं एक मैनेजर है
एक सुपरवाइजर है, एक टीम लीड है और एक स्टार परफॉर्मर है, सीनियर है मार्केटिंग डिपार्टमेंट का, लेट्स से, राइट। जो मार्केटिंग मैनेजर बैठा हुआ है उसने बोला कि गिव मी अ सोल्यूशन फॉर द नेक्स्ट एड सेट वी शुड रन। यू गो माय सुपरवाइजर, द नेक्स्ट एड सेट वी शुड रन इस टाइप का होना चाहिए, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए। ओके नाइस लीड, नेक्स्ट एड सेट जो हमको रन करना चाहिए ये यू इसने जो बोला उसको इलैबोरेट करते हुए ओके नाइस। हाँ भाई, जूनियर और सीनियर इन द मार्केटिंग डिपार्टमेंट, व्हाट डू यू थिंक? I like the idea of my supervisor. I like the idea of my lead as well. However, I think if we were to take both of those and maybe implement a geo-fenced kind of an atmosphere for our perfume shoppers, so they are being displayed the ad when they are looking for a perfume instead of just randomly an ad flashing on them, which they might overlook. Did you see the difference in the third conversation? I like what he said. I also like what he said. However, there's that, the small pauses, the before each, that means you're thinking, you're processing. There's that, or I like what he said, I also like what he said, but if I were to do it, I would like to do this. You're just firing whatever's coming in your mind, like the other two did. Madam Markin, okay, everyone's good. He's going to do what he wants at the end of the day, right? He's going to take everyone's and he will probably be the person. Isne bola, this person said this, I should do this. The marketing manager might be the one doing that. That's why he's the marketing manager. But imagine now that the junior or the senior in the department is executing or exuding these traits. Next time a promotion comes for a lead, guess who's getting selected? That person who takes a quick moment before giving out their thoughts and their mind. So let's learn from this. Let's keep practicing. Let's keep being more aware consciously on how we're communicating लोगों के साथ, facial expressions वगैरह पे, and certain way of delivering पे focus करना चाहिए, right? एक होता है कि हम चाहते हैं हमारे घर में कुछ change हो, example, एक हफ्ते तक फैमिली ने बैठ के खाना नहीं साथ खाया, आई डोंट नो, जस्ट एग्जांपल, बाप आता है घर पे, एक हफ्ते से कोई फैमिली के साथ खाना नहीं खा रहा, क्यों हम साथ खाना खाना चाहिए, इराडिक एनर्जी। एक होता है बाप आया, हाँ मेरे बच्चों, हाँ बेगम, कैसी हो आप, सबसे यार मैंने नोटिस किया है फॉर अ वीक वी हैवंट बीन हैविंग अ फैमिली डिनर, इज देयर अ रीजन बिहाइंड इट? सी द डिफरेंस इन कम्युनिकेशन, getting information on why this hasn't been happening instead of coming and why this hasn't been happening. We haven't done this for a week. This needs to happen. Why did the ball drop? Blah, blah, blah. Allegations, accusations, defensive, fast-paced delivery instead of starting a conversation the way we just talked about. But to replay, हाँ जान कैसी हो, क्या हो रहा है, क्या चल रहा है? You know, let's talk about why एक हफ्ते से we haven't had dinner together. What's going on? What's keeping us from doing this? Trying to solve the problem through communicating in a concise and slowed down kind of a manner. So, मैं भी learn कर रहा हूँ, continuously कर रहा हूँ. Every day it's an evolvement. I still mess up. I still get shaky. I still lose my chain of thoughts and all the good stuff. It's part of life and it's okay. It's okay to mess up, learn from it, try again, do a better job, and you'll succeed. Signing out, Pakistan. Hopefully we'll all communicate a little better after today.